Hello students, welcome to the online lectures of Ignited Minds. Students, in last lecture we talked about the International Solar Alliance, and somehow related is today's topic, and that recently happened, a conference recently happened that is called as Conference of Parties 26. Now what is COP26 and what is the India's stand with this COP26? What has India's Prime Minister promised in the COP26? We'll discuss all these things here. So recently in Glasgow, it's a city in Scotland, UK, what happened there was a summit. This is a conference of parties, is basically COP26. This was the 26th summit of these parties, whereby all the nation countries which basically take pledge, or which basically talk about, which are taking steps to combat this climate change के impacts को, climate change के threat को, climate change के direct influence को जो face कर रहे हैं, they here come and basically they discuss and they take some pledge what we will do regarding the climate change globally. So we can say this is an apex body, this is a decision making body regarding the climate change and what are they going to do for the next years and what they have done until now. So what India has done, India basically, our Prime Minister, he made some promises regarding this climate change in this COP26. So actually what is the problem? Basically climate change in the last decade, and the last decade or two, we can say we are facing now much threats of the climate change, चाहे direct चाहे indirect, and उसका impact our economy is facing, and uska impact our diplomacy is facing, our international relations are getting determined by this and what not. Everything is basically today revolving around this threat of global warming and the global change, global climate change. क्या कुछ direct influences है, क्या indirect influences है. सबसे ज़्यादा चर्चे में जो चर्चित बात जो इस टाइम है, that is basically around this change of climate. जो ये आबो हवा में change हो चुकी है, इसके क्या impacts है, इसके क्या effects है. Our scientists basically they are warning us that if you don't want to see much more further disastrous impacts of this climate change, or in order to basically avoid more hazardous impact of this climate change, we have to reach net zero by 2030. Now what is net zero by 2050? Now what is net zero? Basically net zero emissions, it talks about the carbon emissions. If we talk about what is net zero emissions, यहाँ पे एक जो concept आ रहा है net zero का, net zero emissions का. Basically net zero emissions simply talks about the release of carbon and basically how much you have to absorb the carbon. And in the Paris Agreement, what was decided? Paris Agreement जो 2016 में साइन की गई थी 22 अप्रैल को, Paris Agreement में ये फैसला लिया गया था कि भाई आपका मेन गोल ऑफ द Paris Agreement was that you have to limit the global warming to well below 2 degrees Celsius, and preferably you have to limit it to 1.5 degree compared to the previous pre-industrial levels. So Paris Agreement को लेके क्या चर्चे हुए, and carbon dioxide, basically we have this carbon dioxide, methane and other greenhouse gases, they are in the nature. We know these gases are already, they prevail, they surround our mother earth, they are there, nature has provided them and kept them in certain quantities. ठीक है, अब ये जो quantities है, if somehow what we are doing, we are basically developing nations, they are towards the development, they have to use the machinery, they have to emit the carbon dioxide, उनको अपनी economy develop करनी है, and for that purpose they have to release the gases will be automatically, these carbon emissions will be automatically in this environment. अब carbon dioxide जो है ये एक greenhouse gas है, it has a quality, it has a dual character. Basically what it does, it allows the sun's shortwave radiations to enter this earth, and basically it doesn't allow them to go back. So ultimately what is happening, carbon is getting captured, and ultimately it was very okay and fine until it was in the limited quantities. But now since the emissions are increasing, we are increasing the carbon dioxide gas in the atmosphere, and thereby we are indirectly, we can say, we are increasing the temperature of the atmosphere. And once the temperature is increasing, glaciers are melting. Once the glaciers are melting, there are frequent floods, there is shortage of the water, there is basically so much of the things are happening related directly and indirectly to climate change. We are
having some direct hazardous impacts. We are facing we can say the cloud bursts, we can say the disruptions of these monsoon rains. We are facing tremendous amounts of we are having the heat waves, we are having the cold waves. Global warming doesn't only mean that climate change doesn't only mean that climate is getting warmed, or basically it means whole of the global climate is getting impacted in one way or another. Somewhere some things are happening that we have the ocean currents, they are hot ocean currents are moving towards the areas where they were already coldness. Now what is happening, the hot currents are basically impact the whole of the coastal areas. Fishing is getting impacted, fisheries are getting impacted, agriculture is getting impacted. We are having direct it's not about just the physical parameters of that बारिश ज़्यादा हो गई and बर्फ ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा हो गई. Basically it defines, it governs the economy, it governs the politics, it determines the relations of the countries. Diplomacy, 2015 agreement जो था, Paris agreement, basically Donald Trump withdrew himself. What is the reason? What is the capitalist thought? What are the industrialist thought? What are the spectacist? Everything gets determined by this climate change. तो इसी को सिलसिले में लेके what happened in COP26 इनको आना पड़ा, and basically they have to say what are you doing. These countries were asked, they have to say what have they done. If you have Paris agreement is a legally binding, तुमने ये फैसले लेने हैं, तुमको ये चीजें करनी है, क्या तुम कर पाए, क्या तुम net zero emissions पर पहुंच चुके, यानी कि तुम अगर इतना कार्बन रिलीज कर रहे हो, इतने गीगावाट टन सपोज रिलीज कर रहे हो 500, क्या तुमने वो 500 एब्जॉर्ब भी किए, कैसे एब्जॉर्ब करोगे, व्हाट आर द वेज टू एब्जॉर्ब, आर यू डूइंग द थिंग्स. सो देयर इज ऑलवेज a dichotomy between developing and developed nations. They say we have to get developed, we have to do development, we have to make the industries, we are tend to release this emission. Developed nations बोलते हैं क्यों करोगे. So there is always this difference of opinions. So there comes so many of the concepts related to the climate change. तो उसी के regarding COP26 was held at Glasgow, where nations came forward and they said what agreement, what basically pledges they are doing, what have they done. किसी country ने बोला up to 2060 will achieve this zero emissions. किसी country ने बोला up to 2050. India said first time that 2070 तक हम भाई कर देंगे net zero emissions, and India is basically challenging and asking the other nations, अगर तुम इतना, India is third largest emitter of carbon dioxide, and India बोल रहा है हमको बहुत per capita हिसाब से देखो हम तो बहुत कम रिलीज कर रहे हैं. आप US को देखो वो कितना ज्यादा 16 gigawatts is releasing per capita, हम तो बहुत कम कर रहे हैं, आप तो इतना ज्यादा कर रहे हो. But US is saying no, you cannot follow the Paris agreement, you have to reach up to this 2070 Paris 2070 you have to reach up to this net zero emissions. So whole diplomacy and politics also revolves around these concepts. So what happened, our prime minister said in this, basically he made a promise, and that basically 5 promises he said he will do 5 things, and these 5 things were termed as Panch Amrit. तो सारा खेल यहाँ पे समझ आता है. इट्स रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट्स मेनली रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड अदर. मीथेन का अगर इफ यू टॉक अबाउट मीथेन इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट फॉर द ग्लोबल वार्मिंग देन द कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसको कैसे कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करना है, एमिशंस को कैसे कम करना है, कार्बन सिंक्स बनाने हैं. कार्बन सिंक्स विल एब्जॉर्ब द कार्बन. क्या आप क्या आप एफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो, क्या ये चीजें कर रहे हो. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वर डिस्कस. अल्टीमेटली आवर प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi, he basically said that he is doing 5 promises, and those 5 promises were called as Panch Amrit. Now what were the 5 promises our prime minister made in this COP26? So COP26 basically which revolved around main about this net zero emission concern, about the climate change, about the politics going regarding the climate change, the dichotomy between the developed and developing nations, the concerns what we are doing, what we have done. India is asking developed nations, अगर तुम इतना रिलीज करोगे 2060 तक, तुम बोल रहे हो you will reach, पर 2060 तक जिस हिसाब से तुम एमिट कर रहे हो उस हिसाब से कितना ज्यादा तुम तब तक एमिट कर पाओगे, एंड 2060 में भले ही तुम जीरो पर पहुंच जाओ, पर तब तक तुम क्या कुछ एनवायरनमेंट में हैजर्डियस इंपैक्ट्स एमिशंस कर लोगे. तो खैर इंडिया now finally gave a promise. He pledged to work on the 5 promises, and they were called as Panch Amrit. Amrit means nectar, 5 nectars, 5 promises. So he said India will reach its non-fossil energy up to 500 gigawatt by 2030. तो पहला promise, Panch Amrit का पहला promise, these are 5 promises made by India. So first promise, what he said,
he said India will reach its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts. Non-fossil energy, non-fossil energy up to 500 gigawatts by 2030. पहला promise. Second promise, he said he will meet 50% of its energy requirements from renewables. 50% of its energy requirements. 50% of its energy requirements from, कहाँ से? Renewable sources यूज करूंगा मैं. I will use renewables, I will shift to renewables, and 50% जो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंट्री में डोमेस्टिकली, वो मैं कहां से यूज करूंगा, वो मैं कहां से उपलब्ध करूंगा? रिन्यूएबल सोर्सेज से. एंड ही गेव अ ईयर फॉर दिस. ही सेड इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 2070, by 2030. Third promise, he said that will reduce total project carbon emissions by 1 billion. Reduce total carbon emissions by 1 billion. Why 1 billion tons from now to 2030? From now to 2030. 3 promises. Fourth promise, he said basically by 2030 India will reduce carbon intensity of its economy. By 2030 India will reduce carbon intensity of its economy by to less than, basically to less than what it's doing, to less than 45% of its economy by 2030, to less than 45%. And fifth was that main promise, I will reduce or I will reach up to the main thing what was decided in this Paris agreement कि क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम टेम्परेचर राइज कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या तरीके है. He said net zero emissions तक मैं पहुंच जाने की, जितना मैं डिलीवर करूंगा, जितना मैं एमिट करूंगा उसको मैं उतना एब्जॉर्ब भी करूंगा, एंड नेट जीरो इक्वल हो जाएगा. जितना मैं प्लस कर रहा हूं उतना मैं माइनस भी करूंगा. कब तक? 2070 तक. तो ही विल अचीव नेट जीरो बाय 2070. इसको नेट जीरो बोलते हैं, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं इसको. नेट जीरो emissions by 2070. So China said 2060, EU said 2050, some nations have already said 2050, many nations are not giving their exact dates. India has the first time said that up to 2070 I will reach net zero emissions. कार्बन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट जो है वो मैं अचीव कर दूंगा. क्या ये चीजें हो जाएंगी? ये 2030 क्यों बेसिकली डेट दिया गया है? अगेन लेट्स गो बैक टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और जो गोल्स हमको 2030 तक अचीव करने हैं. बेसिकली दैट डेट इज दिस. So that date is actually here and that date is the limit कि अब तक मैं ये 5 चीजें कर दूंगा 2030 तक. So non fossil energy 500 गीगावाट by 2030. तो कितना non fossil energy? We have already decided that India जो already काम कर रहा है क्लीन एनर्जी को लेके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी है, क्लीन एनर्जी को लेके इंडिया इज सेइंग आई एम डूइंग 2045 तक मेरे जो टारगेट है 2045 तक मैं 2030 तक मैं 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यूज करूंगा. और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोसेस जो है, सेटअप जो है वो मैं इंडिया में इंस्टॉल कर दूंगा. उसमें बेसिकली ही सेड पहले मैं 2022 तक काम करता हूं, मैं कुछ टारगेट 2022 तक रखता हूं, जिसमें ही हैज सेड दैट 100 गीगावाट्स आई विल यूज फ्रॉम द सोलर, 60 I will use from the wind, and 10 I will install of the biopower, and 5 I will install of this what we called as 5 gigawatts will be from small hydropower projects. तो ये 175 gigawatts का जो टारगेट है ये इंडिया कहता है I will achieve till 2020. और फिर उसको and finally somehow this is going very well. India is doing very well to achieve these renewable targets. यानी कि India is shifting its focus from fossil fuels to the non-fossil fuels. They are long lasting, they are less polluting, the environment even doesn't have
have a threat from that. So India is saying it will achieve this target of 175 to 2020, and that is somehow achieved, somehow good results are obtained. And now 2030 तक का जो टारगेट था 450 गीगावाट इंस्टॉल करने का, अब वो किसी तरीके से 500 गीगावाट तक इसने कह दिया हमारे प्रधानमंत्री ने. He said I will reach up to the 500 gigawatts now, and then he said 50% जो मेरी एनर्जी है रिक्वायरमेंट कंट्री की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट वो मैं रेन्यूएबल से ही करूंगा. कब तक? 2030 तक. कैन ही रियली डू दैट? लेट्स सी. कैन वी रियली अचीव दीज टारगेट्स? लेट्स सी. एंड रिड्यूस द टोटल कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स. कार्बन एमिशंस में रिड्यूस कर दूंगा. आई विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बेसिकली फ्रॉम नाउ अंटिल टू 2030. एंड ही सेड इंडिया की बाय 2030 कार्बन इंटेंसिटी जो मेरी इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी है वो मैं लेस देन 45% भी कर दूंगा. लेस देन 45%. अल्टीमेटली नेट जीरो एमिशंस बाय 2070. सो दीज गोल्स, दीज टारगेट्स, सारा फोकस जो है इंडिया की मेन बात यहीं पे है कि मैं डेवलपमेंट भी कर लूंगा. होल फोकस इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट करूंगा लेकिन सस्टेनेबल तरीके से. एज वी नो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली इज गोइंग ऑन. इंडिया इज डिपेंडेंट, मेनी नेशंस आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स. एवरी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री इज बेसिकली फोर्स्ड टू यूज द फॉसिल फ्यूल्स. अभी रेन्यूएबल्स पर शिफ्ट करने के लिए इट इज अ ह्यूज कैपिटल डिमांडिंग कंसेप्ट. एंड कैसे करोगे, कितना पॉपुलेशन है, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है. सो इंडिया इज नाउ इवन इन दिस डेज इंडिया इज फेसिंग द कोल क्राइसिस जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में. कोल क्राइसिस हो रहा है, फॉसिल फ्यूल क्राइसिस हो रहा है. सो इसी दौरान इंडिया इज सेइंग नाउ आई हैव टू शिफ्ट, आई एम इवन शिफ्टिंग, आई एम अचीविंग, आई हैव अचीव्ड. तो 2030 तक मुझे मौका दो, मैं 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी अपनी कंट्री में लगा दूंगा, प्रोसेस सेटअप कर दूंगा. 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो मेरी डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है कंट्री की वो मैं कहां से लाऊंगा? आई विल यूज बेसिकली अगेन रेन्यूएबल्स. सो डेवलपमेंट करूंगा और साथ साथ मैं अपना नेट जीरो एमिशन भी अचीव करूंगा. यानी कि डेवलपमेंट भी कर दूंगा लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर दूंगा. एनवायरनमेंट को भी थ्रेट नहीं होगा, एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और मेरी डेवलप भी हो जाएंगी. तो सारा कंसेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड दो 617 गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हिच हैज द 169 टारगेट्स एंड 304 एग्रीमेंट्स व्हिच वर बेसिकली डिसाइड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ COP21. ठीक है, तो दिस होल कंसेप्ट COP26 एंड इंडियाज प्रॉमिस. सो इन नटशेल बेसिकली डेवलपमेंट हैज टू गो पैरेलल, बट यू हैव टू सेव द एनवायरनमेंट आल्सो, बिकॉज नाउ इन द लास्ट 1 or 2 decades environmental threats and these concerns are more we can say on one day, on the another day we are facing some environmental disaster, wild fires, we are facing the glacial lake outbursts, we are facing the melting of the glaciers. हमारी directly economy पे impact हो रहा है. every concern is involved, conferences, summits, workshop, whatever is happening. main agenda तो climate change का ही होता है. साइंटिस्ट ने वार्निंग कर दी भैया अगर कम नहीं करोगे in order to basically avoid more hazardous impacts of the climate change, you have to reach net zero emissions by 2050 and basically you have to, और क्या बोला, you have to halve the global emissions by 2030. जो आप emissions कर रहे हो उनको भी कम कर दो 2030 तक. और ये करने के साथ साथ आप क्या कर दो, आपको basically hazardous जो आपके पास ये, अगर आप hazardous impacts ना देखना चाहते हो, you have to reach the net zero emissions by 2050 plus you have to halve the global emissions by 2030. तो ये साइंटिस्ट का कहना है. पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया बेसिकली व्हाट वाज द डिसाइड, देयर वाज अ लिमिट, ए लिमिट हैज बीन डिसाइडेड कि आपको इतना टेंपरेचर कम करना पड़ेगा. जब टेंपरेचर कम करने का मतलब ही है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करनी पड़ेगी. वो कैसे होगी? रिड्यूस द एमिशंस, रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. भैया ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये वो वाले खतरनाक गैसेस है. दे हैव ड्यूअल कैरेक्टर, दे लेट द एनर्जी कम बट दे ट्रैप इट, दे डोंट लेट इट टू गो बैक. एंड वंस दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, whole concepts is getting degraded, whole ecosystem, whole carbon cycles, whatever the things are naturally happening in the environment, they get impacted by one way or another. Ultimately वो होने के साथ साथ our economy, our people, our threats, our concerns, our food, our shelter, our security, everything is in what we call as is in problem. So that is the concept. Conference of 26 जो Conference of Party 26 हो चुकी थी, इंडिया ने ये promises किए कि मैं भाई ये 5 चीजें कर दूंगा और मैं इतना चुप कर चुका हूं. So this whole agenda, climate change is a threat. We know there are nations who deliberately, some developed nations who deliberately are skepticists. Skepticists are the people are basically who deny something reality, who deny some reality. Like we have the Donald Trump who withdrew himself out of the Paris Agreement कि मैं कैसे करूँगा, मुझे तो करना ही नहीं है, होता ही नहीं है, climate change है ही नहीं, ये is a myth, it doesn't happen. Who is saying climate is changing? So let's forget about that. The reality is yes, climate is changing.
चैलेंजिंग एनर्जी क्राइसिस है, वी हैव टू शिफ्ट टू फॉसिल टू नॉन रिन्यूएबल्स, फॉसिल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग, इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, ये कैसी इस पॉपुलेशन की डिमांड जो है वो कैसे आप पूरी करोगे, एनर्जी डिमांड कैसे पूरी करोगे वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स और डिग्रेड ना हो जाए, साइंटिस्ट की बात भी समझनी पड़ेगी। और यही हमको सिखाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने, विच टॉक्स अबाउट पीस, planet, partnership, prosperity and people. Let's get together and let's make this world a wonderful place to live in. So thank you students, that was all regarding this. In a nutshell, that was a brief discussion about the COP26, climate change, Paris Agreement and India's promise and renewables and a need to shift from fossil to non-fossil fuels. Thank you students, God bless you.